Dear listeners, tonight we have Shri Kesang Namthak Tenzing, Regional Provident Fund Commissioner, Employment Provident Fund Organization, popularly known as EPFO Sikkim, and we have Hemant Kumar Das, Enforcement Officer, EPFO Sikkim. In our conversation, we will delve into the roles and beneficiary schemes offered by the Employees Provident Fund Organization, EPFO, and explore its future plans aimed at contributing to the socio-economic development of Sikkim's people. Sir, both of you, welcome to the studio of Akashvani Gangtok. Thank you very much. Sir, to begin with, could you please briefly enlighten us basic roles of EPFO in Sikkim? So basically, EPFO implements the EPF and Miscellaneous Provisions Act of 1952, under which there are three schemes, which is the Employees Provident Fund Scheme of 1952, the Employees Pension Scheme of 1995, and the Employees Deposit Linked Insurance Scheme of 1976. As you know, in Sikkim, the EPF and MP Act of 1952 was implemented on 1st of November 1995. Since then, we have enrolled almost 40,000 contributing members. Currently, we have that much. We have around 1,100 contributing establishments, which makes it the largest number of contributing members and establishments in the entire Northeast. The other states of the Northeast, like Mizoram and Nagaland, they are far behind, only about 2,000 to 3,000 contributing members. Sir, recently Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana has been in the headlines. Could you please tell a little bit more about it? So, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana was officially launched by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Damodar Das Modi ji, on the 15th of August from the ramparts of the Red Fort. In the Independence Day speech, he announced Yojana, which has an outlay of almost rupees 1 lakh crores. It is expected to benefit 3.5 crore youth of our country during the course of the Yojana. The period of the Yojana is from 1st of August 2025 to 31st of July 2027, with special focus on manufacturing units where there will be an additional 2 years. So for manufacturing units, the Yojana will be applicable for 4 years. I will be speaking more in detail about the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana. There is a threshold of 20 employees at an establishment. Once it crosses a threshold, it is a statutory obligation to be covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. Currently, the Government of India, through the Ministry of Labour and Employment, caters to the unorganized sector like your gig and platform workers through the eShram portal, speaking for the Employees Provident Fund organization, which is the implementing agency for the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana. So under the Yojana, the scheme is basically divided in two parts, Part A and Part B. Part A is for employees, Part B is for the employer. Part A is any new employee, that is an employee whose date of joining is after the start of the Yojana, that is 1st of August 2025, whose universal account number, that is his PF number, which is authenticated with the Aadhaar, it's a 12-digit number, whose UN number is activated after the 1st of August 2025 through the Umang app, which is a government app under which there are several other government departments, prominent among them being EPFO. So the UAN number has to be activated through the Umang app with the help of facial authentication technology, FAT. It is also advised to download another app called the Face Reader app. So once the universal account number is activated and that employee joins any establishment, which is a establishment covered under the EPF Act. And if he is a new joinee, that new joinee will be eligible for getting the first month's EPF wage of rupees 15,000. So this money is being provided by the government to incentivize him, to upskilling him so that he has a sharp learning curve and he enhances his chances of employability in the future as well. So in order to get this subsidy amount of 15,000, it has to be ensured that the new joinee contributes. There's a contribution for 6 months. The Yojana also focuses on sustained employment. That is why there has to be at least 6 months contribution, which has to be remitted through the return, which we call the ECR, which stands for Electronic Challan Cum Return for the new joinee. This 15,000 is paid in 2 installments. The first installment of rupees 7,500 will be paid after 6 months contribution, and the remaining balance amount will be paid at the end of 12 months on completion of a financial literacy course, which will be designed in-house by the Employees Provident Fund organization. Basically, it's a course on financial literacy in the sense that the new joinee will be, taught the importance of savings and also taught about, safeguarding him or herself from
the vagaries of digital fraud, etc. And this second installment will be paid in a savings scheme in the name of the member. Coming to Part B of the Yojana. Part B of the Yojana is for the employers. Now, the employer will first and foremost have to register the establishment in the website, which we have dedicated website for the Yojana, which Shri Hemant Das, my colleague, will be explaining. So the establishment will have to register itself in the portal, and then this establishment will be getting, we have basically two categories of establishments. Yes. The first category is establishments having less than 50 employees, and the second category is those which have more than 50 employees. So for the first category, which has less than 50 employees, they'll have to ensure that at least 2 new employees join during the course of the Yojana. And for those above 50 employees, we'll have to ensure at least a minimum of 5 new joinees. This Yojana basically is for 2 years with additional focus, as I said previously, for the manufacturing units for another 2 years. That's 4 years for the manufacturing units. Once these new joinees, their monthly contribution up to rupees 3,000 will be subsidized by the government, will be paid in the bank account linked with the PAN. Similarly, for the new employees, the first month's EPF wage of 15,000 will also be paid in the Aadhaar-linked bank account, which is basically direct benefit transfer. So this amount is up to 3,000 rupees for anyone earning between 20,000 rupees to rupees 1 lakh gross wages, or anyone earning between 10 to 20,000, it will be 2,000 rupees, and anyone earning from 0 to 10,000, it is 10% of that will be the contribution amount which will be paid to that establishment. So this Yojana basically has 3 main focus pillars. The 3 main pillars being, first is additional employment, second is formalization, and third is incentivizing the employer. हेमंत जी, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का जो बात हो रहा है, इसमें रजिस्टर कोई बेनिफिशियरी कैसे करे? जी, रजिस्टर तो जैसे सर बोले कि इसमें रजिस्टर करना जरूरी है एम्प्लॉयर के लिए, तो रजिस्टर कैसे होगा? इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट डेवलप किया गया है जिसका नाम है PMVBRY, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसको शॉर्ट में PMVBRY.gov.in। इसमें जाके कोई भी एम्प्लॉयर जिसका पीएफ में नंबर है वो रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसमें 3 चीज जरूरत है। जीएसटी नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट विद आईएफएससी कोड होना चाहिए, और उसका डीएससी या ई साइन से वो कर सकते हैं। तो ये जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट पहले उनको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड हो जाने के बाद डीएससी या ई साइन से वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे। बस इसकी प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। 1.5 से 2 मिनट लगेंगे ये करने में, एकदम सिंपल है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये कोई बेनिफिशियरी अगर चाहे तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और सबको ये रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है ईपीएफओ को सारी सुविधाएं का उपलब्धि लेने के लिए इस रजिस्ट्रेशन जरूर करें। सर, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि जो निधि आपके निकट 2.0 बहुत चर्चे में है, इसके बारे में थोड़ा हमारा श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। निधि आपकी निकट 2.0 यानी इसका एक पहले का भी एक आइटरेशन था जिसे हम निधि आपकी निकट कहते थे, और ये मासिक 10 तारीख को होती थी। जितने भी हमारी ईपीएफओ की क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पे एक ग्रीवांस रिड्रेसल का एक कार्यक्रम होता था। लेकिन हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन्होंने एक निर्णय लिया था कि इसे हम एक डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके आधार पे हमारे जितने भी कार्यालय हैं भारत देश में वो भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और 27 तारीख को इस कार्यक्रम की आयोजन करेंगे। और ये अगर 27 तारीख एक क्लोज हॉलीडे पड़ जाता है तो अगला वर्किंग डे में इसका आयोजन होगा। निधि आपकी निकट का 2 खास वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल जैसे मैंने कहा ग्रीवांस रिड्रेसल है, ऑन द स्पॉट ग्रीवांस रिड्रेसल, और जहां पे हम इसका रिड्रेसल नहीं कर पाते हैं ऑन द स्पॉट तो उसको हम रजिस्टर करते हैं हमारे ग्रीवांस पोर्टल में, जिसे हम EPIGMS कहते हैं, और फिर हम इसको 7 दिन के अंदर इसका कंप्लीट रेजोल्यूशन हम करते हैं। दूसरा इसका वर्टिकल है डिसेमिनेशन ऑफ जो भी हमारे जो नई हम लोग जो न्यू स्टेप्स लेते हैं, कुछ नई चेंजेस लाते हैं, तो उस चीज का डिसेमिनेशन हम निधि आपकी निकट माध्यम से करते हैं। और इसी दिन हम लोग जो हमारा जो प्रयास योजना है जिसके माध्यम से हमारे जो मेंबर है जो सुपर एन्युएट हो रहे हैं ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, तो वो उनके जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है PPO, वो भी हम उनको न्योता देके उस वेन्यू में बुला के उनको फेलिसिटेट करके उनको PPO उनको हाथ में देते हैं। तो और इसी कार्यक्रम में और इसी में अगर किसी मेंबर का जीवन प्रमाण अगर अपडेट करना हो तो वो भी हम लोग वहाँ पे बूथ लगाते हैं और जहाँ पे हम इनको की सहायता करते हैं। Sir, my last question to both of you. Any further suggestion from both of you to our esteemed listeners? जी, एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा इस अवसर को लेते हुए। पहले हमारे ऑफिस में EPFO में फॉर्म 2R बोल के एक चीज था, नॉमिनेशन फॉर्म। ये बहुत ही जरूरी फॉर्म है, तो मैं अभी इसको ऑनलाइन किया गया है, डिजिटल आप इसको दे सकते हैं। फॉर्म 2R ये हर एक एम्प्लॉई
अपने पोर्टल में जाके वहां से इसको अपलोड कर सकते हैं। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए आपके जो फैमिली है उनका आधार नंबर और उनके फोटोग्राफ्स, बस इतना ही चाहिए। इनको आप डालिए। इसमें 2 पार्ट हैं, एक ईपीएफ पार्ट, एक ईपीएस पार्ट। ईपीएफ पार्ट में आप जिसको अपना ईपीएफ का पैसा नॉमिनेट करना चाहते हैं, जिसको देना चाहते हैं, कितने कितने % में देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। और दूसरा पार्ट है पार्ट बी, इसमें ईपीएस पार्ट। इसमें आपके फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम जरूर होने चाहिए। इनको अपलोड करने के बाद आपका ई साइन करना होगा। ई साइन कोई बड़ा चीज नहीं है। आपका जो वहां पर नीचे में एक बटन आएगा ई साइन करने का, आपका जो मोबाइल आधार से लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा और वो अपलोडेड जो आपने अपलोड किया उसको आप वहां से ई साइन से साइन कर दीजिए। आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया ई नॉमिनेशन का। मैं सिक्किम के सभी श्रोता को मेरा आग्रह होगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो जो रजिस्टर्ड नहीं है ईपीएफ एक्ट के अंदर, उनको जल्द से जल्द आप रजिस्टर हो जाइए। ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है इसका लाभ उठाइए ताकि आपके जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज, उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ उनको भी मिले। और जैसे हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उनका अभी निर्देश भी है कि वर्कशॉप्स करके जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको इस हमारे जो कवर्ड इस्टेब्लिशमेंट्स उनको भी रजिस्टर करवा के एम्प्लॉयज को भी उनका यूएन एक्टिवेट करके उनको सहयोग करके ये वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंप्स करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाएं। तो मेरी सिक्किम के सारे जो नियोजक है उनको भी मेरी अनुरोध है, अगर आप कवर्ड नहीं हो ईपीएफ एक्ट के अंदर, आप कवर्ड हो जाए। और जो इस्टेब्लिशमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड है तो आप एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपको सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव मिल रहा है, इसका आप लाभ उठाइएगा। Sir, sincere thanks to both of you for coming to Akashvani Gangtok studio. So, dear listeners, we had Shri Kesang Namthak Tenzing, Regional Provident Fund Commissioner, EPFO Sikkim, and Shri Hemant Kumar Das, Enforcement Officer Sikkim. I hope, sir, our listeners will be enlightened with different scenarios related to the rights regarding EPFO. This is Mainak Chatterjee from Akashvani Gangtok signing off. Please subscribe to our official YouTube channel, that is Akashvani News Gangtok, and stay tuned to Akashvani Gangtoks till we further meet again.